So students, will be study about the long question. Explain the development of female gametophyte in plants. Now comes to the answer. Development of female gametophyte in angiospermic plant includes following structure. First, we will study about gynoecium. तो gynoecium पिला जानथिबो फ्लावर रो gynoecium टा होची कोन गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ तार इंडिविजुअल पार्ट को कोन कहजे कार्पेल और पिस्टिल कहजे. So each carpel or pistil consists of a flattened stigma, a long tubular style and a swollen basal swollen base रे गोटे swollen ovary अछि. And inside ovary there are one or more ovules are present. Next structure will be ovule or megasporangium. So a fully mature ovule consists of a stalk and body. गोटे fully mature ovule रो कोन अछि ना गोटे stalk अछि आ गोटे body अछि. The stalk is called as funicle. The stalk of ovule called as funicle. जेमति flower stalk को कहा जाय pedicel, सेमति ovule stalk को कहा जाय funicle. The stalk of ovule called as funicle and the attachment point of funicle with the body called as hilum. Funicle जो जगह रे body सहित attach हेछि ताको कहा जाय hilum. Next होछि the body have an upper micropylar end and a basal chalazal end. गोटे upper micropylar end अछि आ basal chalazal end अछि and the opening is called as micropyle. गोटे opening अछि micropylar end गोटे opening अछि जहा कहै जे micropyle. ताले से कहबा सर एठी तो होछि कोन micropylar end तळे अछि chalazal end ऊपर अछि ना सेटा नु से कहछि this is a structure of anatropous ovule. Anatropous ovule होछि कोन गोटे inverted ovule कोन ना in most of angiosperm plant the ovules is inverted which is known as anatropous ovule. There are 6 types of ovule अछि 6 प्रकार ovule अछि बुझिला से को जो protective covering called as integument. जो ovule रो देखो बाहर कोन अछि एक दुई दीटा protective covering अछि से दीटा protective covering कोन पा जे integument. And these integument encloses a parenchymatous mass of cell. कौन करछि ना गोटे parenchymatous mass of cell को cover करिके अछि and this parenchymatous mass of cell is called as nucellus. तारे प्रोटेक्टिंग कवर को कौन कहा जाय इंटेगुमेंट कहा जाय आउ सेही इंटेगुमेंट कौन करछि ना गोटे मास ऑफ सेल को कवर कर रखिछि parenchymatous mass of cell को कवर करि रखिछि जा कहा जाय nucellus. Next होछि at the center nucellus center रे कोन अछि the female gametophyte is situated which is developed from a single functional megaspore. गोटे functional megaspore ही develop होछि and each embryo sac or female gametophyte consists of an egg, synergid and antipodal cell. egg अछि synergid अछि आ antipodal cell अछि. Next comes to the types of ovules. कहथिल 6 प्रकार ovule अछि depending upon the position of micropyle and chalazal and ovules are of 6 types: orthotropous, anatropous, hemi-anatropous, amphitropous, campylotropous and cysteinotropous. Tale these are the 6 different types of ovule: orthotropous, anatropous, hemi-anatropous, campylotropous, amphitropous and cysteinotropous. जोटा कि हमर लॉन्ग क्वेश्चन रे डिस्क्राइब करबा दरकार नै. हमर anatropous ovule टा ही कोन थाए ना मोस्ट कॉमन इन angiosperm. तन करी एछु डायग्राम किछि लिखिबारा दरकार नै लॉन्ग क्वेश्चन रे लिखिबा दरकार नै. Next comes to the megasporogenesis. Megasporogenesis कोन ना the process of development of megaspore from megaspore mother cell through meiosis is known as megasporogenesis. Next होछि ताले megasporogenesis कोन ना एटा होछि ଗୋଟେ प्रोसेस जोथरे megaspore डेवलप होबो काहाटू ना megaspore mother cell through meiosis. At the very early stage of the ovule development, the subepidermal cell of nucellus act as archisporial initial cell. से होछि nucellus रो जे कोनसी subepidermal cell epidermis तळे जो सेल ता कहे subepidermal cell से कोन करे ना archisporial initial भाबे act करे archisporial initial and these archisporial initial act as megaspore mother cell माने megaspore mother cell भाबे
act କରନ୍ତି and these megaspore mother cell divides meotically means meiosis ହେଇକି so meiosis ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଦିଟା ଷ୍ଟେପ ରେ ହୁଏ meiosis 1 meiosis 2 meiosis 1 ଗୋଟେ ହୁଏ meiosis 2 so meotically to produce 4 haploid cell ପ୍ରଥମ meiosis 1 ରେ କ'ଣ ହବ 2 cell stage ହବ ତାପରେ 4 cell stage ହବ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ସେଲ କ'ଣ ହବ ନା ଚାରିଟା ମେଗାସ୍ପୋର ତିଆରି ହେବ ଚାରିଟା ମେଗାସ୍ପୋର ହାପ୍ଲଏଡ ଇନ୍ ନେଚର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମେଗାସ୍ପୋର ମଦର ସେଲରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାରିଟା ହାପ୍ଲଏଡ ମେଗାସ୍ପୋର ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିନିୟର ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ସିଧା ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଲିନିୟର ଟେଟ୍ରାଡ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏ ଲିନିୟର ଟେଟ୍ରାଡ ହେଲା ପରେ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲର ଏଣ୍ଡ ପଟେ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅଛି 1 2 3 ଏମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଡିଜେନେରେଟ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ ରେ ମାନେ ଆମର ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ତିଆରିରେ ଚାରିଟା ହିଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ତିଆରି ହୁଏ ସେଠି କିଛି ଡିଜେନେରେଟ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେଗାସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫଙ୍କସନାଲ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଗା କ'ଣ ହେଉଛି ଡିଜେନେରେଟ କରିଯାଉଛି ବୁଝିଲା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଜୁଲୋଜିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଢିବ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗ୍ୟାମେଟୋଜେନେସିସରେ କ'ଣ ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଉଜେନେସିସ ଯେତେବେଳେ ଉଜେନେସିସ ହେଉଛି ଓଭମ ଗୋଟିଏ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସରେ ସ୍ପର୍ମ ଚାରିଟା ହବ ଓଭମ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହବ ସିମିଲାରଲି ମେଗାସ୍ପୋରୋଜେନେସିସରେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମେଗାସ୍ପୋର ଫଙ୍କସନାଲ ରହିବ ଆଉ ଲୋୟର ମୋଷ୍ଟ ମେଗାସ୍ପୋର ୱିଲ୍ ବି ଫଙ୍କସନାଲ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ କେମିତି ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପଟା ହେଉଛି ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ଅର ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍ The process of development of female gametophyte or embryo sac from functional megaspore is called as megagametocytogenesis or it is also known as megagametogenesis. Megagametogenesis. So this is the functional megaspore. मेगास्पोर कौन हम ना मेगास्पोर गोटे एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट हम जहाँ मेगा गैमेटोफाइटोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस ताले हमर केतेटा फंक्शनल मेगास्पोर अछि गोटे फंक्शनल मेगास्पोर अछि तादर तीनटा कोन हैला ना डीजेनेरेट करेला ऊपर जो तीनटा अछि डीजेनेरेट हे गेला सो दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 माइटोटिक डिवीजन तीनटा माइटोसिस डिवीजन करिवो जे तीनटा माइटोसिस डिवीजन हला कोन हैला ना गोटे फंक्शनल मेगास्पोर कोन अछि गोटे हैप्लोइड न्यूक्लियस अच्छी तो फास्ट माइटोसिस कौन हम दीटा हाप्लोइड न्यूक्लियस हम सेकेंड माइटोसिस चार्टा हम थर्ड माइटोसिस कौन हम 8टा न्यूक्लियस से द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 8 न्यूक्लियस 8टा न्यूक्लियस तैयारी करूची अब 8टा न्यूक्लियस कौन होची these mitotic division are not followed by cell wall division that is these are 3 nuclear division एठी cell wall formation हो नै केवल nuclear division होची तो जेतबे 8टा nuclear division हे गेला से कोची where out of these 8 nucleus 6 are surrounded by cell wall to produce 6 haploid cell so out of 8 nucleus 6 are surrounded by cell wall to produce a 6 haploid cell ये जो 8टा अछि 8टा रु 6टा रे कोन हबो ना cell wall formation है कि 6टा haploid cell तैयारी करिवो and from these 6 cell 3 are goes towards the micropylar end तीनटा micropylar end को जीवा and it will produces egg apparatus egg apparatus तैयारी करिवो egg apparatus consist of an egg and 2 synergid middle egg मझरे जोटा अछि सेटा होछि egg ता साइड पर दीटा जो अछि सेटा होछि synergid आ egg और synergid को combinedly कहा जाय egg apparatus and rest 3 are moves towards the चालाजाल एंड which form antipodal cell चालाजाल एंड को जो तीनटा गला से माने antipodal cell तैयारी कले remaining 2 nucleus moves towards the center को गले and fuse to form a central cell है कि तैयारी कले तो central cell तैयारी कले एटा इंटरेस्टिंग कथा मन रख central cell जेतेबेल हैला सेठी न्यूक्लियस दीटा मिसिलानी किंतु सेल गोटे हे गेला तेणुक टोटाल केतेटा सेल रहिला 1 2 3 ऊपर 3टा माइक्रोपाइलर सेल रहिला चालाजालेन रे कोन अछि ना 3टा सेल रहिला तो 3 3 6टा तो मझिरे जो सेलटा तैयार हैला से कोन करूची ना इट कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्ली बट सिंगल सेल तो ऊपर 3टा
तले 3टा सेल मान चालाजाल एंड रे 3टा सेल माइक्रोपाइलर एंड रे 3टा सेल 3 3 6 आ सेंटर रे गोटे सेल सेंट्रल सेल तो 7टा सेल कि जदि हम न्यूक्लियस काउंट करबा केतेटा हेला 1 2 3 4 5 6 मझरे दुईटा 8टा न्यूक्लियस व्हिच इज नोन एज पॉलीगोनियम टाइप आकवा जे पॉलीगोनियम टाइप सो जदि हमें कोन जदि we know that the angiospermic plant contains anatropous ovule anatropous ovule टा कोन inverted अछि तल चला जलेंटा नॉर्मली चला जलेंटा बेस रे हुए माइक्रोपाइल टा कोन माइक्रोपाइलर एंड टा कोन हुए अपर रे हुए किंतु जदि इन्वर्ट कर दबा तले कोन हला चला जलेंटा कोडी पळे आसला ऊपर पळे आसला माइक्रोपाइलर एंड तळ किंतु एटा हम केबे भी कहि परियन जे माइक्रोपाइलर एंड इज बेसाल एटी इन्वर्टेड ओव्यूल अछि दैट्स व्हाई माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट एट लोअर साइड बेसाल साइड कहि परियन हला जेतुडा इन्वर्टेड anatropous ovule most of the angiospermic plant bear anatropous ovule तले हम इन्वर्टेड ओव्यूल कथा कहूचे ए डायग्राम ता तले कोन हो इन्वर्ट हे जिवो तो इन्वर्ट हे गेले कोन देखो तळे माइक्रोपाइलर एंड रे कोन रहिला तीनटा सेल व्हिच इज नोन एज एग apparatus मिडिल वन इज नोन एज एग साइड टू आर नोन एज synergy in chalazal end रे कोन আছে तीनटा सेल अछि which is known as antipodal cells आउ सेंटर रे जो दुईटा न्यूक्लियस थिला से कोन कला एटा देखो गोटे सेल तयारी करछि ना नै जा को जे सेंट्रल सेल with two polar nuclei दुईटा पोलर न्यूक्लियस ताल टोटल सेल केतेटा हे गेला 1 2 3 4 5 6 7 7टा सेल किंतु न्यूक्लियस केतेटा हला 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझला क्वाजे पॉलीगोनियम टाइप डेवलपमेंट ऑफ ए मोनोस्पोरिक पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो साइक पॉलीगोनियम कहले 8टा न्यूक्लियस टाइप अच्छा मोनोस्पोरिक कोन देखो केतेटा फंक्शनल मेगास्पोर एठी अछि गोटिए फंक्शनल मेगास्पोर सो से कोजी व्हेन द एम्ब्रियो साइक इज डेवलप फ्रॉम ए सिंगल functional megaspore it is known as monosporic embryo sac which is commonly found in angiospermic plant next comes to the organization of embryo sac we have already discussed it khali taku mu note ready koi dochi a fully developed embryo sac consists of following structure egg apparatus kono na this is a group of 3 cell situated at micropylar end this is a group of 3 cells situated at the micropylar end to eta point ame janiya paile na da jo pote egg rohichi ta ko je kono micropyle end opposite to egg ta ko je chalazal end the centrally located cell of egg apparatus is called egg cell or oosphere which is surrounded by two synergids dita synergid द्वारा surrounded hi gachi the synergids have special cellular thickening called filiform apparatus at their micropylar end तो देखो एठी egg cell रहला ता चारि पाखे जो दीटा synergid अछि तारो बेस पटुको ए सॉरी तारो माइक्रोपाइलर एंड पटुको कोन अछि और बेस पटुको कोन अछि माने synergid रो बेस पटुको सेलुलर थिकेनिंग अछि ठीक अछि गोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करछि व्हिच इज नोन एज फिलिफॉर्म apparatus जहा कहै फिलिफॉर्म apparatus आ फिलिफॉर्म apparatus काम कोन ना ये कोन करिवो ना पोलन ट्यूब को निज आड़ को अट्रैक्ट करिवो गाइड करिवो सो synergid रो काम होछि कोन ना दे गाइड द पोलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बेल को से पोलन ट्यूब को निज मध्य देई जिबा पई अलाउ करिवो जोटा कि डबल फर्टिलाइजेशन रे कहा जिवो तुमको नेक्स्ट होची कोन ना पोलर न्यूक्ली कोन ना दीज आर सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंटिंग ए लार्ज बाइन्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल ताले दीज आर टू न्यूक्लियस मजिस प्रेजेंट एट द सेंटर forming a large central cell with a binucleate condition दीटा न्यूक्लियस कंडीशन अछि नेक्स्ट होची कोन these two nuclei fuse during fertilization or before fertilization पूर्वरु किबा फर्टिलाइजेशन जेतेबेल होउची से समय कोन बे फ्यूज हे जिवे टू प्रोड्यूस ए सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस तो ये कोन हला डिप्लॉयड हे गेला जेतेबेल डिप्लॉयड हे जाउची डबल फर्टिलाइजेशन मन नता सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2n से कोन करे ना कहा से तो मिसिबो सेकंड मेल गैमेट से तो मिसिबो तो ट्रिपलेट स्ट्रक्चर करे तो सेटा को जे एंडोस्पर्म तनो सेकेंडरी न्यूक्लियस केतेबेल हुए ना दीटा का पोलर न्यूक्ली फ्यूज हे की बिफोर फर्टिलाइजेशन किबा फर्टिलाइजेशन बेलू को कोन हबो ना फ्यूज हे की गोटे सेकेंडरी न्यूक्लियस तयारी करे आ लास्ट होचे एंटीपोडल सेल these are three cells situated at the chalazal end and they generally degenerate
soon after fertilization ता चालाजाल एंड रे कोन अछि ना तीनटा सेल अछि जा को जे एंटीपोडल सेल जहा जे कोन अछि ना fertilization pore sange sange degenerate करजे. So this is all about the long question, that is explain the development of female gametophyte in plants. Thank you.